Hello everyone, welcome to this session. Now we are going to see the concept of Kerberos. The Kerberos is a one kind of authentication protocol. Initially, it is developed by the Massachusetts Institute of Technology (MIT) for a project Athena. Okay, प्रोजेक्ट एथेना एक तरीके से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए परमिशंस ग्रांट करने का प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस जो थे आप लोगों के वो यूज कर सकते थे तो फॉर दैट रीजन द ऑथेंटिकेशन इज approved by this Kerberos method. Okay, and the name comes from the three-headed dog the of heads जो ग्रीक मेथोडोलॉजी में कहा जाता है कि एक थ्री हेडेड डॉग था तो उसका नाम कर्बरोस था वहां से ये नाम थ्री तरीके की सिक्योरिटी वहां पर प्रोवाइड की जाती है तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कर्बरोस. ओके, वी विल गोइंग टू see the actual part of your Kerberos. The main entities in the Kerberos are nothing but the client, which is a one authorized user, server which provides the authority, authentication server is there that performs or identifies the authentication of your client request. Uh, in authentication server, if the client is authenticated successfully, it gets a TGT. It get a TGT, that is ticket granting ticket. एक आप लोगों को acknowledgement वहाँ पर मिलता है कि yes you are a approved one and successfully authenticate by the authentication server. So it gives you a TGT. The TGT proves to the other server that client has been authenticated. एक तरीके से हम कैसे वन बाय वन स्टेप्स के थ्रू हम लोग खुद को ऑथराइज करते जा रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज टू ऑथेंटिकेट दैट the client, whatever the client who is going to access the resources of your server system will be authorized one. Okay, so now this tgt this tgt is again passes to the next level. So next level, key distribution center is there. In this key distribution center, there are three parts. It will logically separated into three parts: database, authentication server, and ticket granting server. So you can see in a diagram, the key distribution center consists of a authentication server, ticket granting server, and a database system. Okay, after that the tgt server is there. Whatever the ticket granting ticket, this tgt issued by the authentication server is provided to this ticket granting server. Okay, then application server which provide the issuing service tickets as a service. By verifying the ticket granting ticket, by verifying the tgt, it will provide the uh, services whatever the required to their particular application. Then the three most important keys are used. First, client send a client and user secret key, which is developed by calculating the hash value. TGS is a secret key which is provided by calculating the hash value determined by the TGS or used to determine the TGS. Server secret key, which is again a hash value of a password used to determine the server offering the services. Whatever the services provided by the server will uh, provide it to you by determining the secret key, server secret key. Okay, so these are the three secret keys are used for a specific application for authentication. Here comes the main important part of your Kerberos. First of all, the client want to access the resources of your server system. Okay, then first of all, it is it send a request to the authentication server. Authentication server is a part of your key distribution center where the database is stored for authentication server and TGS. बहुत सारे अपने जो पुराने रिकॉर्ड है जितने भी नंबर ऑफ ऑथराइज क्लाइंट्स होंगे उनके डेटाबेस आप लोगों के यहाँ पर प्रिपेयर रहते हैं. So whoever the client send a request to authentication server, authentication identifies the database or identifies it by comparing the its database its request with the database, and then it provide the TGT. This second request is nothing but the reply from the AS to the client side, that is TGT. This TGT request is again sent to the TGS server. Okay, TGS server.
This ticket granting server identifies the yes, the user is authorized one, and it will give a next reply. It is give you another reply to client that you can use the number of resources from the server. And then this request, whatever the request came from the TGS, this request is again passed to the actual server where the resources are stored, and then this server is reply with the number of resources to client. Okay, so this is a simple working, but having a three kind of permissions is required. That is why it is called as a Kerberos system. Okay, see, first of all, this is the initial authentication request. One first step, client requests AS for ticket granting ticket. वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा किसके लिए, टीजीटी जनरेट करने के लिए. द क्लाइंट आईडी इज सेंड टू द रिक्वेस्ट. उसके पास क्या जाएगा, द आईडी ऑफ योर क्लाइंट्स ने, क्लाइंट वहाँ पर चला जाएगा. यहाँ पर आप लोगों का कोई पासवर्ड या फिर कोई सीक्रेट की सेंड नहीं होगी. ओनली द आईडी इज पास टू द ऑथेंटिकेशन सर्वर. Okay, authentication checks the availability of client, yes, whether the client is available or not, that by identifying the database. If the both values are available, then the user secret key is generated by using the hash value of password to the user. वहाँ पर आप लोगों को एक हैश वैल्यू जनरेट हो जाएगी एक सिक्योरिटी के तौर पे, और वो पास की जाएगी आपके यूजर को. द पासवर्ड ऑफ द यूजर इज अवेलेबल इन डेटाबेस. जो यूजर का पासवर्ड है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है. सो TGS is a secret key that is computed by the authentication service. TGS के लिए जो secret key चाहिए होगी वो यहाँ पर आप लोगों की जनरेट की गई होगी. ओके, द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर कुछ और भी नेसेसरी थिंग्स लगेंगी. जैसे कि आपको सेशन एस्टेब्लिश करना होगा फॉर अ पर्टिकुलर रिसोर्सेज, तो हम लोग वहाँ पर सेशन की जनरेट करेंगे जो कि सिर्फ आपके क्लाइंट और TGS सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन में होगी. उसके अलावा आप लोगों के उस TGT में जो जनरेट हुआ होगा, उस TGT कंटेन्स द, TGT में क्या क्या होगा, क्लाइंट का आईडी, एड्रेस, लाइफ टाइम, टाइम स्टैम्प, उसकी लाइफ टाइम मतलब उसका मेंबरशिप, टाइम स्टैम्प मतलब कितने टाइम के लिए हम लोग उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे कि मूवी का टिकट होता है, मूवी हम लोग 3 घंटे की होती है, वैसे ही यहाँ पर उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है. और जो सेशन की वो आप लोगों की यहाँ पर पास की जाती है. तो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड इन अ सिंगल TGT एंड दे आर encrypted by applying some kind of a algorithm, and it will send it to the TGS server. Okay, then क्लाइंट डिक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग सीक्रेट की. जो आपके पास मैसेज आया होगा वो डिक्रिप्ट कर लेगा. एंड देन ऑथेंटिकेटर विच इज यूज टू वैलिडेट द क्लाइंट टू TGS इज जनरेटेड. तो ये जो आप लोगों का ऑथराइज किया होगा क्लाइंट होगा, देन इट विल सेंड द क्रिएटेड ऑथेंटिकेटर टू द TGS. जो TGT उसके पास जनरेट किया गया होगा थर्ड स्टेप में, वो TGT अगेन वो एक्सट्रैक्ट करके आपके TGS सर्वर को वहाँ पर रिक्वेस्ट पास करेगा. देन TGS जो होगा, टिकट ग्रांटिंग सर्वर इज डिक्रिप्ट द रिसीव्ड TGT यूजिंग TGS सीक्रेट की. TGS सीक्रेट की मैंने बताया आपको कि पहले तीन जो थे वहां पर आप लोगों को लगते हैं तीन सीक्रेट कीज आर रिक्वायर्ड. तो TGS सीक्रेट की वो यहाँ पर यूज करके इसको डिक्रिप्ट करेंगे और उसमें से सेशन की को एक्स्टेब्लिश करेंगे, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे. अब यूजिंग दिस की ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेटर जो होगा और उसका आईडी और नेटवर्क एड्रेस ये वहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा और ऑथेंटिकेशन मैच किया जाएगा. ओके, अगेन मैंने बोला था कि वो डेटाबेस जो है वो शेयर्ड है, कॉमनली शेयर्ड विद द ऑथेंटिकेशन सर्वर एंड TGS सर्वर. ओके, सो जब भी ये दोनों मैच हो जाएंगे तो आप लोगों का एक वहाँ पर दूसरा दूसरी तरह का दूसरी बार आप लोग वहाँ पर अपना ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करोगे. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा फिर, टाइम स्टैम्प जो होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हम लोग भेजी थी वो भी वहाँ पर आपको अप्रूव की जाएगी. जैसे लाइफ टाइम, टाइम स्टैम्प और सेशन की जो है ये यहाँ पर अप्रूव की जाएगी. ओके, आफ्टर दैट द फोर्थ वन, TGS डिक्रिप्ट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा ये टाइम स्टैम्प वगैरह एक्सट्रैक्ट हुआ. तो अगर सभी चेक आपके मैच हो जाते हैं तो वहाँ पर दूसरी सीक्रेट सेशन की जनरेट की जाती है फॉर थर्ड कम्युनिकेशन. जो तीसरा तो उसके लिए हमारी सेशन की जनरेट की जाएगी और वो क्लाइंट और टारगेट सर्वर के बीच में यूज़ की जाएगी. ऑब्वियसली जो भी रिक्वेस्ट आएगा ये फोर्थ स्टेप में
फोर्थ स्टेप में आप लोगों को एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द क्लाइंट साइड, and that response is again contain the ID, एड्रेस, टाइम स्टैम्प और शेयर्ड सीक्रेट की, सेशन की जो भी है दूसरी उसमें जनरेट की जाएगी। अगेन दिस इज नथिंग बट द इनक्रिप्टेड फॉर्म, जो भी आपकी रिक्वेस्ट जाएगी वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी। नाउ द स्टेप 5 में क्या होगा, आफ्टर रिसीविंग द क्लाइंट डिक्रिप्ट की एसके1 यूज करके वो उस जो मैसेज आया होगा उसको डिक्रिप्ट करेगा, जो सेशन की है वो वहां पर एक्सट्रैक्ट की जाएगी, एंड देन न्यू ऑथेंटिकेटर विच इंक्लूड द आईडी, नेटवर्क एड्रेस एंड टाइम स्टैम्प इज जनरेटेड यूजिंग द सेशन की 2, ये वहां पर आप लोगों का जनरेट किया जाएगा। Okay, and the last one, by using this key, it will target the it will pass the that request to the target server, and the target server is responsible for providing the number of resources to the client side। कैसे टारगेट सर्वर डिक्रिप्ट करेगा क्या, सर्विस टिकट जो सर्वर सिक्योरिटी की से हम लोग उसके साथ जो आया होगा उसको डिक्रिप्ट करेगा, सेशन की जो होती है दूसरी वो एक्सट्रैक्ट की जाएगी सर्विस टिकट से, यहाँ पे जो फिफ्थ स्टेप में आया था। द नेक्स्ट, द ऑथेंटिकेटर इज डिक्रिप्टेड यूजिंग सेशन की एंड क्लाइंट आईडी, सेशन की और क्लाइंट आईडी का यूज करके और टाइम स्टैम्प और ये सारी चीजें वहां पर एक्सट्रैक्ट की जाएगी, आइडेंटिफाई की जाएगी। अगर सब वेरीफाई होता है प्रॉपरली, देन the server provides the number of services to the client side. If all the checks are met, the target server returns a message consisting of a timestamp plus one encrypted with the SK2 to the client। ये आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई प्रोवाइड कर देगा, दैट मीन्स योर सेशन इज गोइंग टू बी established and you can use the number of resources from a server side। So this is how the Kerberos authentication protocol allows clients to communicate over a network in a secure manner। तीन तरह की वहाँ पर आप लोगों को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। पहला, क्लाइंट का खुद का आईडी भेज के एक टिकट जनरेट करना पड़ेगा, उसमें आप लोगों का क्लाइंट का आईडी, पासवर्ड, लाइफ टाइम जो भी है वो इंफॉर्मेशन एडेड हो जाएगी। इट विल पासेस टू द टीजीएस सर्वर अगेन वेरीफाई ऑल द नेसेसरी थिंग्स, और उसके रिलेटेड वो एक सेशन की जनरेट करेगा और उस सेशन की को आप लोग टारगेट सर्वर को पास करेंगे टू एस्टेब्लिश अ सेशन एंड गेट द नंबर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम इट। ओके,